everyone, this is Tanvi and this is my very first teaching video. We are taking up the topic respiration of chapter 6 life processes. It is a revision for me but it might help some of you. Before we begin, we have to know the difference between respiration and breathing. What is breathing? It is inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide, what we all are doing right now. But respiration is a rather complex process because it involves more steps. But the two major steps are first breathing. Breathing comes under respiration, and second is cellular respiration. Well, this implies the breakdown of food to produce energy in our cells. Energy for what we are doing right now. That is the main fuel of our body. Now we will be taking up the three pathways of respiration. But before that, we have to know what is aerobic respiration, which takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration in the absence of oxygen. So the very first one is aerobic respiration, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. सबसे पहले हमें पता है ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ग्लूकोज तो हर रेस्पिरेशन में सबसे पहले आएगा ही आएगा. अब ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6, so 6 कार्बन. ग्लूकोज ब्रेकडाउन करेगा पायरुवेट में. ये तीनों स्टेप्स में कॉमन है क्योंकि ग्लूकोज हमेशा सबसे पहले पायरुवेट में ब्रेकडाउन करेगा एंड दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. So in the presence of oxygen, pyruvate breaks down into three substances: CO2, H2O, and large amount of energy. Large amount because oxygen is present. The second one is the anaerobic respiration in plants. So here the glucose breaks down into pyruvate. अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब फिर भी पायरुवेट ब्रेकडाउन करेगा, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो. अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुवेट ब्रेकडाउन करेगा तीन चीज़ों में. सबसे पहले इथेनॉल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरी लेस एनर्जी. ऑक्सीजन नहीं है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी. एंड द लास्ट स्टेप इज विच टेक्स प्लेस इन अस ह्यूमन बींग्स इन आवर मसल सेल्स. जब भी हम खुद को ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर लेते हैं, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम. So what happens whenever we overexert ourselves, the entire oxygen gets used up and that causes lack of oxygen. इसी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पायरुवेट जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है लैक्टिक एसिड में. और एनर्जी यहाँ पे कम ही रहेगी. जब भी ऑक्सीजन नहीं होता तो एनर्जी वेरी लेस होती है. तो इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से वी फील क्रैम्प्स एंड वेरी बैड पेन्स विच माइट टेक प्लेस इन आवर लेग्स, बैक. तो इस वक्त वी रिक्वायर हॉट वाटर बाथ्स, मसाजेस, क्योंकि ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सेल्स को. Up respiration in plants. Respiration in plants के लिए we require three organs, well, roots, stem and leaf. Roots में the plants intake oxygen with the help of diffusion. But we have to take care that excessive amount of water ना हो जाए roots में, नहीं तो plant survive नहीं कर पाएगा क्योंकि वो oxygen नहीं ले पाएगा. Stem और leaves में we have stomata. Stomata the tiny pores which help in exchange of gases. तो green stem हो चाहे वो green leaves हो, उनमें stomata present होगा जिससे respiration take place करेगी. Now we go to respiration in animals. Before we go to human beings, we have respiration in other animals like cockroach. Cockroach have spiracles through which they undergo respiration. Amoeba have a cell membrane. Earthworms, leech undergo respiration through their moist skin, and fish have gills. Now we come to the main topic, which is respiration in human beings. This is a complex process because we have a number of parts which help in respiration. First, we start from the nose and then nostrils. Then we have pharynx and larynx. Larynx is the voice box, जिससे मतलब हम बात करें तो वो larynx की मदद से कर रहे हैं. Then we have the trachea, which is the windpipe. The trachea further splits into two bronchus. Bronchus further splits into bronchioles, and bronchioles के end में जो होते हैं वो होते हैं alveolar air sacs. ये alveoli होते हैं जहाँ पे exchange of gases होती है. The main organs for respiration in humans are the lungs, and then we have a thin sheet of muscle below the lungs, which is the diaphragm. So we will be talking about the mechanism of breathing in human beings. Whenever we inhale oxygen, lungs को expand होना होगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेनी है. तो the ribs move upwards and outwards. तभी lungs में जगह बनती है और ऑक्सीजन ले पाते हैं. जो diaphragm होता है वो एकदम opposite जाएगा, वो downwards जाएगा. This is inhaling of oxygen. But when we exhale, the ribs come back to their position. So the ribs move downwards and inwards.
क्योंकि हमने exhale कर दिया and the diaphragm move upwards, come back to the normal position. So this was the mechanism of breathing. Well, this was my video till now, and we will be taking up some next topics in my next videos. Till then, stay tuned. Thank you.